जय सद्गुरुदेव, जय पद चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 10 श्लोक 26 व 27। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैः श्रवसमस्वानां विधीमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। आध्यात्मिक भाव। अनंत प्राण शक्ति ही समुद्र है। मेरु पृष्ठ देखने पर कूर्म की पीठ के समान जान पड़ता है। मेरुदंड ही सुमेरु पर्वत है। मेरुदंड के सबसे नीचे मूलाधार पदम में जीव चैतन्यमयी कुंडलिनी शक्ति विराजमान है। जब जागृत होकर मेरु मध्यस्थ सुषुम्ना में मंथन करती है तो ज्ञान रूपी अमृत प्रदान करती है। कूटस्थ में समुज्वल ज्योति प्रकाशित होती है। भगवान की मुरली की सुमधुर तान मदहोश कर देती है। वृहत ज्योति के अभयंतर विश्व के राजा श्याम सुंदर मदन मोहन राधा सहित दर्शन देकर जीव के समस्त संताप को हरण कर अनुपम शांति प्रदान करते हैं। Among all trees, I am the people tree. Among divine rishis, Narada. Among Gandharvas, Chitrarath. Among the perfected ones, the Muni Kapila. The people tree is regarded as the holiest tree and worshipped, and there is a divinity attached to it. The spiritually enlightened ones are called the rishis, not only from men but also from among the devas. Rishis have sprang up. Among the Dev rishis, the sage Narada is the foremost. He constantly sings the glory of God and spread the divine message everywhere. All the spiritualists take aspiration from his example and propagate the divine knowledge in the world. The Gandharvas are the stars of entertainment in heaven. They serve the court of Lord Indra. Among them, Chitraratha is the most brilliant genius who had been maintaining the title of best singer up there for times immemorial. They are called Siddhas, who are endowed from birth onwards with righteousness, wisdom and dispassion. A Muni is he who is constantly established in Japa Yajna. Sage Kapila is one endowed with all these virtues. He is held to be an incarnation of Lord Vishnu. Of horses, know me to be Uchchai Shrava, who rose out of the ocean, born of the elixir of immortality. Of lordly elephants, I am Airavat, and among men, I am the monarch. Mythology speaks elaborately of the churning of the ocean of milk by devas and asuras to get nectar from it. However, both nectar and poison were produced. Lord Shiva drank the poison.
Many wonderful things presented themselves as byproducts which were collected and distributed to deserving deities, and the main work of the churning was continued with non-stop diligence and enthusiasm until they gained what they wanted. One of the presentations that came up during the churning process was the winged horse, mighty and powerful, called the Uchchaishrava, and the white elephant, Airavata. Both of them were presented to the king of gods, Indra. It is said altogether 13 such tempting objects of might and glory of supernatural powers presented themselves during the churning. Kings are mentioned here because at one time they are appointed due to their godly qualifications and were truly superior man. Kings like Lord Rama, Maharaja Parikshit were highly righteous kings who always considered their subjects' welfare. In Vedic literature, the king is considered the representative of God. With the corruption of the principles of religion in the age of Kali Yuga, monarchy has decayed and has been largely abolished. People were much happier, however, under a righteous and godly king. Spiritual significance. Infinite power of pranas is the ocean. The spinal cord is the Meru Parvat. Near the bottom end of the spinal cord, the serpent power, Kundalini, is seated in the coiled form at the Muladhara Padma. When awakened, it churns the pranas, pierces through Agya Chakra, and reaches Sushumna. The drops of nectar produce fathomless Atmic Anand, pure divine light, down and enlightens the aspirant with real knowledge of the self. The melodious tune of the flute of Lord Krishna enchants his entire being. Lord appears in his full glory and destroys the veil of Maya to bestow infinite bliss and everlasting peace. Om. जय गुरुदेव जय पदशरण. अध्याय 10 श्लोक 26 आणि 27. अश्वत्थं सर्ववृक्षाणां देवर्षिणा च नारद गन्धर्वाणा चित्ररथा सिद्धाना कपिलो मुनि उच्चे श्रवसमश्वाना विधि माममृतोद्भवम ऐरावत गजेद्राणा नराण च नराधिपम. अर्थ. भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, सर्व वृक्षांमध्ये मी पिंपळ वृक्ष आहे, देवर्षींमध्ये नारद मुनी, गंधर्वांमध्ये चित्ररथ आणि सिद्ध पुरुषांमध्ये कपिल मुनी मी आहे. घोड्यांमध्ये समुद्रमंथनातून अमृताबरोबर उत्पन्न झालेला उच्चश्रव घोडा, श्रेष्ठ हत्तींमध्ये ऐरावत आणि मनुष्यांमध्ये राजा मी आहे. भावार्थ. पिंपळ वृक्ष हा भारतीय संस्कृतीत सर्वात पवित्र वृक्ष मानला जातो. त्यामध्ये दिव्यता आणि चैतन्य वास करते अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळे भगवानाने त्याला आपल्या विभूतीपैकी एक म्हटलेले आहे. नारद मुनी हे देवर्षींमध्ये श्रेष्ठ आहेत. ते अखंड भगवान नामाचे कीर्तन करतात आणि सर्व लोकांमध्ये ईश्वर भक्ती, ज्ञान व धर्माचा प्रसार करतात. प्रत्येक आध्यात्मिक साधकासाठी ते प्रेरणास्थान आहे. चित्ररथ हा गंधर्वांमधील श्रेष्ठ गायक व कलावंत मानला जातो. स्वर्ग लोकातील संगीत, कला आणि सौंदर्य याचे तो प्रतीक आहे. कपिल मुनी हे ज्ञान, वैराग्य, तपश्चर्या आणि आत्मसाक्षात्कार याचे मूर्तिमंत स्वरूप आहेत. ते भगवान विष्णूंचे अवतार मानले जातात. जपयज्ञात सतत स्थिर राहणारा जो मुनी, त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे कपिल मुनी. उच्चश्रवा आणि ऐरावत. पुराणानुसार देव आणि दानवांनी अमृत प्राप्तीसाठी
क्षीरसागराचे मंथन केले. त्या समुद्र मंथनातून अमृताबरोबर अनेक दिव्य रत्ने, वस्तू आणि शक्ती प्रकट झाल्या. त्यापैकी एक होता दिव्य, वेगवान आणि समर्थशाली उच्चश्रवा घोडा, तर दुसरा होता शुभ्रवर्णीय तेजस्वी ऐरावत हत्ती. हे दोघेही देवराज इंद्राला प्राप्त झाले. समुद्र मंथन आपल्याला शिकवतो की महान ध्येय प्राप्त करण्यासाठी सतत प्रयत्न, संयम आणि चिकाटी आवश्यक असते. मंथनातून अमृताबरोबर विषही बाहेर आले, परंतु देवांनी प्रयत्न सोडले नाहीत. जीवनातही यश मिळवण्यासाठी अडचणींना समोर जावे लागते. राजाचे महत्त्व. भगवान येथे राजाचा उल्लेख करतात. प्राचीन काळात राजा हा धर्म, न्याय आणि लोककल्याण याचा प्रतिनिधी मानला जात असे. भगवान श्रीराम, राजा परीक्षित यासारखे राजे प्रजेसाठी समर्पित आणि धर्मनिष्ठ होते. वैदिक परंपरेत राजा हा ईश्वराचा प्रतिनिधी मानला गेलेला आहे. आध्यात्मिक भाव. अनंत प्राणशक्ती म्हणजेच आध्यात्मिक महासागर. मानवी मेरुदंड हा मेरू पर्वत आहे. मेरुदंडाच्या तळाशी मूलाधार चक्रात अवस्थेत कुंडलिनी शक्ती वास करते. जेव्हा ही शक्ती जागृत होते तेव्हा ती सुषुम्ना नाडी मार्गे वर चढू लागते. चक्राचे भेदन करत करत ती आज्ञाचक्रापर्यंत पोहोचते. त्या अवस्थेत साधकाला आत्मज्ञानरूपी अमृताचा अनुभव येतो. कुटस्थामध्ये दिव्य ज्योतींचा प्रकाश प्रकट होतो. भगवान श्रीकृष्णाच्या मुरलीचे मधुर स्वर अंतःकरणाला मोहित करतात. तेव्हा भगवान आपल्या दिव्य स्वरूपात दर्शन देतात. मायारूपी पडदा दूर करतात आणि साधकाला अनंत आनंद, शांती आणि आत्मसाक्षात्कार प्रदान करतात. आजचा संदेश. पिंपळाप्रमाणे स्थिर, जीवनदायी आणि पवित्र बना. नारद मुनीसारखे भगवान नामाचा प्रसार करा आणि सतत ईश्वर स्मरणात राहा. समुद्र मंथनाप्रमाणे जीवनातील संघर्ष स्वीकारा. अमृत प्राप्तीसाठी प्रयत्न सुरू ठेवा. कुंडलिनी जागृतीसाठी साधना, श्रद्धा आणि गुरुकृपा आवश्यक आहे. अंतर्मनातील दिव्य प्रकाशाचा अनुभव घेतल्यावरच खरे स्थान, शांती आणि जीवन आनंद प्राप्त होतो. जीवनाचे मंथन सातत्याने करत राहा, कारण प्रयत्नाच्या सागरातूनच आत्मज्ञानाचे अमृत प्रकट होते. हरिओम. जय गुरुदेव. जय पदशरण. గీతాసుధ అధ్యాయం 10 విభూతి యోగము శ్లోకము 26 మరియు 27. అసిద్ధ సర్వవృక్షాణం దేవర్షీణాంచ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో మునిః. నేను సమస్త వృక్షముల్లో రావి చెట్టును, దేవర్షుల్లో నారదుడను, గంధర్వులలో చిత్రరథుడను మరియు సిద్ధుల్లో కపిలముని. శ్లోకం 27. ఉచ్చైశ్రవ సమస్వానాం విద్ధిమామృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రాణం నరాణాంచ నరాధిపం. అశ్వముల్లో అమృతంతో పాటు ఉత్పత్తి అయిన ఉచ్చైశ్రవమనే అశ్వమును, శ్రేష్టమైన గజముల్లో ఐరావతమని పేరుగల ఏనుగును, మానవుల్లో రాజును నన్నుగా తెలుసుకో. ఆధ్యాత్మిక భావము. అనంత ప్రాణశక్తే సముద్రము. మేరు వెనక భాగాన్ని చూసినట్టయితే కూరము యొక్క వీపువలే అనిపిస్తుంది. మేరుదండమే సుమేరు పర్వతము. మేరుదండము యొక్క బాగా కింది భాగమున మూలాధార పద్మములో జీవచైతన్యం గల కుండలిని శక్తి విరాజిల్లుతూ ఉంటుంది. అది మేల్కొన్నప్పుడు మేరు మధ్యన గల సూక్ష్మములలో మదనం చేస్తుంది. పిమ్మట జ్ఞానస్వరూపమైన అమృతాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. అంతటా కూటస్థమందు సముజ్వల జ్యోతి ప్రకాశిస్తుంది. భగవానుని మురళి యొక్క సముద్ర నాదం మత్తు కొలుపుతుంది. మహత్తరమైన జ్యోతి లోపల విశ్వానికి రాజైన శ్యామసుందరుడు మదనమోహనమైన రాధతో దర్శనమిచ్చి జీవి యొక్క సమస్త సంతాపములను హరించి అనుపమానమైన శాంతిని ప్రసాదిస్తాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్. జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 10 ശ്ലോകം 26-27. അശ്വത്ഥഃ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷിണാം ച നാരദഃ ഗന്ധർവാണാം ചിത്തരഥഃ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഃ.
ഞാൻ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളിലും അശ്വത്ഥം അഥവാ അരയാൽ വൃക്ഷമാണ്. ദേവർഷിമാരിൽ നാരദമുനിയും ഗന്ധർവരിൽ ചിത്രരഥനും സിദ്ധന്മാരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. ഉച്ചൈഹ സ്രവസം അശ്വാനാം സിദ്ധി മാമമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നാരാണാം ച നരാധിപം. കുതിരകളിൽ അമൃതത്തോടൊപ്പം ഉദ്ഭവിച്ച ഉച്ചൈസ്രവമ്പ് എന്ന കുതിരയും ശ്രേഷ്ഠ ആനകളിൽ ഐരാവതം എന്ന ആനയും മനുഷ്യരിൽ രാജാവും ഞാനാണെന്നറിയുക. ആധ്യാത്മിക ഭാവം. അനന്ത പ്രാണശക്തിയാണ് സമുദ്രം. മേരു പർവ്വതത്തിന്റെ പിൻഭാഗം ആമയുടെ പുറന്തോട് പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. മേരുദണ്ഡം അഥവാ നട്ടെല്ല് തന്നെയാണ് സുമേരു പർവ്വതം. മേരുദണ്ഡത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മൂലാധാര പദ്മത്തിൽ ജീവചൈതന്യമയ്യായ കുണ്ടലിനി ശക്തി വസിക്കുന്നു. അത് ഉണർന്ന് മേരുദണ്ഡത്തിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള സുഷുമ്നാ നാഡിയിൽ മദനം നടത്തുമ്പോൾ ജ്ഞാനരൂപമായ അമൃതം പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കുംസ്തത്തിൽ അത്യുജ്വലമായ ദിവ്യജ്യോതി പ്രകാശിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ മുരളിയുടെ മധുരനാദം ആത്മാവിനെ മതോന്മത്തനാക്കുന്നു. വിശാലമായ ദിവ്യജ്യോതിയുടെ അന്തർഭാഗത്ത് ലോകാധിപതിയായ ശ്യാമസുന്ദരൻ രാധാദേവിയോടൊപ്പം ദർശനം നൽകി ജീവന്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും നീക്കി അതുല്യമായ ശാന്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि. हम समस्त वृक्ष सब में पीपर के गाछ छी, देवर्षि सब में नारद मुनि छी, गंधर्व सब में चित्ररथ छी, आ सिद्ध पुरुष सब में कपिल मुनि छी. उच्चैश्रवसं श्वानां विद्धि मामृतो मधम ऐरावतं गजेन्द्राणां नरानाम च नराधिपम. घोड़ा सब में अमृत मंथन काल उत्पन्न भेल उच्चैश्रवा नाम के घोड़ा हम छी. अश्रेष्ठ हाथी सब में ऐरावत नाम के हाथी हम छी. अमनुख सब में अहाँ हमरा राजा बुझू. अनंत प्राण शक्ति समुद्र अछि. मेरु पृष्ठ देखला में कुर्मक पिट्ठी एहन लागैत अछि. मेरु दंडे सुमेरु पर्वत अछि. मेरु दंड सँ नीचा मूलाधार पद्म में जीव चैतन्यमय कुंडलिनी शक्ति विराजमान रहैत अछि. जखन ई शक्ति जागृत भऽ कऽ मेरु के मध्यवर्ती सुषुम्ना बाट के मंथन करऽ लागैत अछि तखन ज्ञान रूपी अमृत प्रदान करैत अछि. कूटस्थ में अत्यंत उज्ज्वल दिव्य ज्योति के प्रकाश होमऽ लागैत अछि. भगवान के मुरली के सुमधुर तान साधक के प्रेमानंद में मोहि लैत अछि. ओहि विराट ज्योति के अंतराल में विश्व के अधिपति श्याम सुंदर मदन मोहन श्री राधा संग दर्शन दऽ कऽ जीव के समस्त संताप दूर कऽ दैत छथि आ अनुपम शांति प्रदान करैत छथि. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा. हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें. धन्यवाद.